हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ पैडोलॉजी ऑफ इंग्लिश, और इसमें हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, क्योंकि 7 तक हमने लास्ट वीडियो में करा दिया था। तो हमारा क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रोल प्ले। जो हम रोल प्ले करते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक का रोल प्ले करे या फिर बाहर की दुनिया से खुद को कनेक्ट करे, उसका आखिर वो फंक्शन क्या है, मतलब वो करता क्या है। तो role play models human interaction to provide a chance for a student to exercise creating effects and memorable experience for learners. It places a learner in a situation where they are asked to take on different roles and to accomplish their specific task, including problem solving. They offer an opportunity for learners to practice using the language in the right place at the right time. The strength of a role play is that is present an opportunity for authentic and spontaneous communication. Becomes learners are placed in realistic situation and they can have the opportunity to use and practice the shots of a language, particularly the vocabulary related to this situation. So the learners are rehearsals for the real life. In addition, they can express what they want to say whenever the situation calls for it. In addition, role play of a great signification as it develops the student both receptive and productive skills. So basically ये बोल रही है उसका फंक्शन क्या है कि बच्चे के अंदर क्या है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है, और बच्चों को क्या लगता है कि बहुत अलग अलग तरीके की सिचुएशन वो रियल लाइफ में भी हैंडल कर पाता है। रियल लाइफ की सिचुएशन को अपने रोल प्ले से अपने रोल प्ले से कनेक्ट कर पाता है। और उसके अंदर क्या क्या होता है इसमें, मतलब जैसे कि उस चीज़ से सिर्फ रोल प्ले नहीं कर रहा, उससे बहुत सारी उसके अंदर की खूबियाँ और डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि रिसेप्टिव स्किल होते हैं और एक प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है, जिसके अंदर हम रिसीव करते हैं, जैसे कि सुनना। ठीक है, तो सुनना क्या है, एक रिसेप्टिव स्किल है। और प्रोडक्टिव क्या है, जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि लिखना, हम कुछ सोच के लिख रहे हैं, या फिर बोलना। ठीक है, बोलना और लिखना क्या है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। तो वो रोल प्ले में दोनों चीज करता है, क्या करता है, सुनता भी अच्छे से और बोलता भी अच्छे से। तो उसकी ये स्किल क्या होती है, डेवलप होती है। इट डेवलप स्टूडेंट लिसनिंग वाइल रोल प्ले स्टूडेंट्स प्रैक्टिस लिसनिंग व्हेन ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आगे कौन सी लाइन आनी है, कौन सी लाइन नहीं आनी है, प्रैक्टिस में ही उनके इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। फिर जब रोल प्ले करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। It develops students speaking, answering the question according to what is heard, producing respond based on giving clues. It is clear that it this activity can practice speaking skills. Okay, promoting knowledge एक्विजिशन। अब नॉलेज में कैसे हमारी प्रमोट होती है, अब वो देखेंगे हम। स्टूडेंट्स इन रोल प्ले वर फाउंड टू यूज सर्च एंड रेलिवेंट स्ट्रेटजीज फॉर मोर फ्रीक्वेंट देन स्टूडेंट्स इन ट्रेडिशनली learning situation. During the process of exchange, there will be the information transfer for one peer to the another. Individual students are able to increase their mastery during this process. During the entire process, students are motivated to search language in their vocabulary, storage, and select the proper language to use. For example, teaching a reading about a writer's biography is usually broad, and the events that are written expressed are uneasy for the students to master. In this case, after the student read, so वो उसकी नॉलेज को कैसे प्रमोट करता है। जब भी हम रोल प्ले करते हैं तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स लाएंगे। फिर जैसे हमें प्रेजेंटेशन देती है, तो जितनी बुक में लिखा होता है सिर्फ वही नहीं बोलते हैं, हम गूगल करते हैं, हम सर्च करते हैं, हम उसके विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जो जैसे कि उसका ऑथर क्या है, क्यों लिखा, पर्पस क्या था, थ्योरी क्या था, मोरल क्या था, ये सब जान करके फिर एक अपना पूरा सार अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब बच्चा रोल प्ले करता है तो सिर्फ रोल प्ले में वो अटका नहीं रहता, वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ढूंढता है, डिस्कवर करता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके बाद उससे उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है। एनहेंसिंग लैंग्वेज प्रोफेंसी। So there is another significant benefit of role play. Language is the main tool for human communication. Role play largely provide more opportunities for the students to practice their oral English. It is an idea. It is an ideal method of revealing what we have learned by using in
it in real situation, it stimulates all the students interacted skills and thus consideration for all this language knowledge. Okay, in their mind while trying to express themselves out, while other who do not involve in this activity can be easy to grab more content knowledge, even just sitting silently and listening to the performance in the school. So लैंग्वेज का क्या होता है कि इसमें बच्चे क्या होता है अलग अलग तरीके का रोल प्ले करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होता है, कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, कोई फनी कॉमेडी करता है, कोई सैड रहने का कॉमेडी करता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में उन्हें कैसे बोलना है, उन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है, उनके डायलॉग कब होंगे, उनके इंटोनिएशन कब होगा, राइज होगा, फॉल होगा, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के ध्यान रखने से क्या होता है उसके अंदर उन्हें लैंग्वेज की और ज़्यादा बारे में पता चलता है। तो सिर्फ जो रोल प्ले कर रहा है उसी को नहीं, जो आगे सामने देख रहा है तो उन्हें भी पता चलता है कि हाँ इस जगह ऐसे यूज़ होना था। जैसे मिस्टेक बहुत जल्दी लोग निकाल देते हैं, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं इसे अच्छा नहीं करा, ऐसा करना चाहिए, तो उन्हें पता चल जाता है कैसे करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। Stimulate students' interest and active classroom climate to keep students engaged in a class। अब हमें क्या हमेशा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना के रखना है और उसे एंगेज करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हो, फिर कुछ भी कराए जा रहे हो, आप खुद ही को समझा रहे हो, खुद ही को पढ़ा रहे हो, बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सिलेबस लगा के चले गए। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। विद रोल प्ले स्टूडेंट्स एक्ट आउट certain situations. Teacher generally Teachers generally try to make the situation fun and etc. The teacher prepare the role so that the learners always have a lot to talk about this motivations students in their in learning, and the certain creates a real communication situation and offer learning parentally of opportunity to practice improving social competition. Okay. The true mastery of a language involves communication, competition with role play in individual work together. They must interact with each other to promote each other. Success does increase students' social skill, conflict management, and comprehension. It also improves students' communicative skills while act out the dialogue. Students get the chance to learn to get information from partners, facial expression, gesture, and body language, and thus they develop students' communication skill. So सिर्फ रोल प्ले से हमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो जाता, और हमारी बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती है, जैसे कि हमें अपने पार्टनर से कैसे बात करनी है, और हमें कैसे बिहेव करना है, और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जब हम कुछ बोल रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, हमारी बॉडी का जेस्चर कैसे होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें कितना कॉन्फिडेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि हम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रमोटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो होते हैं कि जैसे कि आप किसी से बात नहीं करते पर आपने रोल प्ले करना स्टार्ट करा, आपने जैसे एक साइलेंट बच्चा है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता क्लास में, पर उसने और चीज़ें करी एक्टिविटी, तो वो अपने लोगों से मतलब दूसरों से बात करेगा, आस्क करेगा, हेल्प कर लेगा, हेल्प देगा, तो क्या होगा आपस में घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा क्या ईजी होगा। वो बच्चा सिर्फ स्कूल आएगा और जाएगा नहीं, उसे भी इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। प्रमोटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। Role play has also accepted to improve interpersonal relationship among students. Role play pairs of groups help students establish the main relation friendship with peers. Okay, students who are आइसोलेटेड, मैंने बोला ना जिन्हें अलग थलग करके रख देते हैं, हर एक ग्रुप में क्या करते हैं किसी न किसी बच्चे को क्या करते हैं अलग करके रख देते हैं, तो वो सब तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा भी होगा तो उन बच्चों के साथ रोल प्ले करेगा तो और उनके फ्रेंड बनेंगे, ठीक है। alienated from their peers and who do not have friends are more likely to be to risk for violent or destruction behavior in the society, are more likely to be the risk, sorry, uh, to some extent, the interpersonal relationship also promote their academic achievements. In addition, skill of improving interpersonal relationship with others peer are the foundation of the success in their social career in future. Role play also has been linked to increase in self esteem. Okay, self esteem, attendance time to on task, enjoyment of a school and classes, as well as a decrease in dependence of the teacher.
सो ये सब चीज़ होगा क्या, टीचर को भी आसानी होगी, बच्चे भी आपस में घुले मिलेंगे, आपस में कोई भी अलग थलग करके नहीं रहेगा, सबका साथ देंगे, सब अच्छे से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 करता है, एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्ले। सो एक रोल प्ले करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि जो हमारा रोल प्ले हो एकदम परफेक्ट हो और बहुत अच्छा हो। तो कम्युनिकेशन पर्पस रोल प्ले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, उसकी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। सो कम्युनिकेशन पर्पस, द एक्टिविटी मस्ट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन परफॉर्मिंग अ रियल कम्युनिकेशन पर्पस rather than it just a practice language for their own sake. In order for this to occur, there must be some kinds of information gap that students seek to bridge when they are role playing. सो सिर्फ एक इतनी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए बोलने की कि आपको लगे कि सिर्फ आपने डायलॉग बोल के खत्म कर दिया, उसे फील करके अच्छे से बोलना है। कम्युनिकेशन डिजायर, the activity must created a desire to communicate in the students. This that is, even if communication is forced on the student, they must feel a real need of to communication. प्रिपेयर बिफोर परफॉर्मेंस, ओके आप कम्युनिकेशन मतलब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, फिर उससे पहले आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर दी, क्या आपका और एनहेंस हो जाओगे और बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रशिंग इनटू अ रोल प्ले एक्टिविटी ऑफन लीड्स टू कंफ्यूज एंड dissatisfaction. How students practice the task in pair before selecting a couple of pair to perform in front of the whole classes. If acting out a short play before students display their performance, they should be given the script or the story they are going to for work on. They can choose their favorite roles or they will be allotted certain roles. Fourth है acceptable level language requirement. The language required is performance should be lower than the that is used in investment in intensive language learning activity in the same classes. It should be easy recalling and producing by the participants so that they can speak fluent. If it is a good idea to teach a review or essential vocabulary before this activity started. If the task is too frustrating, the students are likely to give up on relative back to the नेटिव लैंग्वेज। सो मतलब अगर आपका रोल है किसी और लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश है, आपका इंग्लिश का नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें उसमें हद से ज़्यादा हार्ड से हार्ड वोकैबुलरी नहीं भरनी, उसे ईजी रखना है, अच्छा रखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बने और वो फ्रिक्वेंटली बोल भी पाए। वो 10 बार अटक जाएगा न्यू चीज़ों को याद करने में, मतलब जो याद करके बोलते हैं उसका आपने देखा अलग होता है, और जो अपने अंदर से आते हैं उसकी चीज़ अलग ही होती है। ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें क्या रखनी है, हमें लैंग्वेज को ईजी से ईजी रखना है और बच्चे को जितना कंफर्टेबल होता है उतने में बोलने देना है। Be sensitive when correcting the students. Okay, the basic principles of error correcting is to remind student of their big error that prevented for communication and ignoring the trivial one. As to when how to get feedback, there is no defined answer. It largely depends on the teacher, long time spent in a teaching, and a consideration in effective and cognitive factor. Nevertheless, that the direction should be put in a mind that they should do their best to avoid fleeting students' attempt at speaking in the target language for providing correct feedback. Clear in responsibility, allotted the role and set up goals so as they make students clear in responsibility. Students interact in small groups and they have less pressure, but they should have a clear responsibility. First, the actor. The student needs lots of support and assistance to practice English. Prize them frequently and they will be competitive and active. So हमें क्या हमेशा हमें जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को अगर कुछ कुछ नया करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिमोटिवेट पहले शुरू कर देते हैं। मोटिवेट तो नहीं करेंगे पर डिमोटिवेट क्या बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए तुम कर सकते हो। ठीक है। Choose some proper text. Not all texts to involve role play activity while teaching. Not all texts shoot for role play activity. Choose a proper students
the first few times when the teacher organize role play, it is a good idea to choose some more outgoing students who will not feel inhabited while performance in public. तो हमें क्या करना है, रोल प्ले करना है किसी बच्चे के साथ, तो हमें उन बच्चों को, आपको अगर आप टीचर हो तो आपको पता होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल कहीं से किसी भी एक्टिविटी में काम ही लेते हैं ना, उनसे लोग बात ना, उनके फ्रेंड बन पाते हैं ना, वो बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को चूज करना है, उन्हीं को आगे फ्रंट में लाना है और बोलना की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, कि उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ड्रामा इन द लैंग्वेज क्लासरूम। अब जो हम ड्रामा करा रहे हैं अपना, या हम अपना रोल प्ले करा रहे हैं, तो हमारी क्लास में उस लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज हम रोल प्ले करा रहे हैं इंग्लिश में और हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और हमें इंग्लिश सीखनी है, तो उससे हमने क्या कैसे कैसे इंग्लिश सीखी। Okay, so using drama to teach English result in a real communication involves ideas, emotions, feeling, appropriateness, and adaptability. In short, an opportunity to use language in operating which is absent in the conventional language classes. Such activity added to the teacher. Repertory and pedagogical strategies given them a wider option to learn certain activities to choose from the classroom teaching, thereby argument their effective in the English language. So सिर्फ इंग्लिश ड्रामा अगर हम सीखते हैं तो उससे हमें क्या क्या पता चलता है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमें रियल कम्युनिकेशन होती है, हम अपने आइडियाज दे सकते हैं, इमोशंस में इमोशंस, फीलिंग, एप्रोप्रिएट, एप्लेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम ड्रामा करें फर्दर लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम सीखना चाहते हैं। Benefits of using drama in language classroom. Many a times the teacher of a English language falls shortly of fulfilling its goals. Even after year of English teaching, the learner do not gain the confidence of using the English in outside the class. Their output in the language is limited to writing run of the mile answer for a literature chapter and producing grammatical accurate but isolated sentence. Real communication involves ideas, emotions, feeling, appropriateness, and adaptability. The convention English has hardly given by the learners an opportunity to use a language in this manner and develop frequently in it. Thus, the main purpose of a language teaching course developing skills in communication and fortunately negligible. So मतलब अगर जब ये सब भी कराएगा तो बच्चों के अंदर क्या, अंदर अंदर तो क्लास कर बोल रहे हैं लेकिन बाहर के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, और ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करानी है और ज़्यादा कनेक्ट करना है। जो आइसोलेटेड, तो उन्हें बच्चों को क्या बोलना है कि आगे आके और बढ़े और आगे जाके एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, फीलिंग और पार्टिसिपेशन को, एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करें। An attractive alternative is teaching language through drama because it gives us context of listening and meaningful language production, forcing the learners to use their language resources and thus enhancing their linguistic abilities. It provides situation for reading and writing. So basically क्या होता है, जब हम जैसे हम टेक्स्ट रीड करते हैं, रीड के छोड़ देते हैं, तो हमें उसकी मीनिंग समझ आए नहीं समझ आए वो भाड़ में जाए, लेकिन हम बस उसे रीड करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम बच्चों के सामने अगर एक एक्ट प्ले करेंगे तो बच्चा अगर सुन रहा है, सपोज मूवी देख रहे हैं, अगर हमें वही मूवी की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही तो हम मूवी क्यों देखेंगे। तो इसी तरीके से एक एक्ट है, जो बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब है, तो बच्चा दूसरे बच्चे जो सुनेगा उसको पता चलेगा अच्छा ये बोल रहा है फिर ये बोल रहा है, तो क्या होगा, इंग्लिश में बोल रहा है तो हमें इंग्लिश में वो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। It is very useful in teaching literature texts as it helps in analytical, polite character and style. It also involves learning more positively and actively in the text as well as reverse status. The drama appropriate approach enables learner to use what they are learning with pragmatic intent. Sometimes that is most difficult to learn through explanation by using grammar techniques to teach English. The monotony of the convention English classes can be broken and the style can be transferred into one which prepares learners to face their immediate world better as a competent user for the English language because they get an opportunity to use the language in operation. Using drama techniques also fulfills the social effective requirements of the learner. Moreover, this oh sorry. Moreover, this learner-centered approach makes the syllabus personally fulfilled.
तो क्वेश्चन नंबर अब हम अपना 11 करेंगे। डिस्क्राइब द प्री रीडिंग, रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग प्रोसेस इन अ क्लासरूम। तो मतलब ये बोल रखा है कि आप जो प्री रीडिंग मतलब रीड करने से पहले जो आप सिखाते हो बच्चों को या फिर क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है। रीडिंग करते समय आप क्या एग्जाम्पल देते हो। पोस्ट रीडिंग मतलब आपने रीडिंग करा ली तो बच्चों का ध्यान है कि नहीं है, तो आपने वो क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ऐसा ही होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी कहता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या हो जाता। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है और हमें बताना है। ठीक है। Pre-reading research has shown that previewing the text in any one of all the following ways can increase your involvement with the text। अगर हम पहले से ही पढ़ के रहे या फिर ज़्यादा करें तो हम जब हम पढ़ाएंगे तो हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। Set a purpose. Set a purpose for reading summary, paraphrasing, entertainment, and make a mental or written notes of your goal in reading the text. The purpose might need to locate significant information and ideas, and you might need to summarize the perhaps the text. Make some prediction about what topic, ideas, and issue the text will cover, and how the author will communicate using the titles and subheading to generate some ideas. Okay, and ask question. हम question पूछ सकते हैं. Post something question after you begin the reading and hope you with the text answer. Okay, नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं जब हम उसके बारे में रीड कराने के बाद उसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या समझ आया, क्या क्या समझ नहीं आया, इस तरीके से। थिंक अबाउट द टॉपिक, familiar yourself with the content, language and the format of the text, with the topic, issue and the ideas the next will cover, and in which way the language and organization of the text are used for the specific purpose of the writing and special themes. The purpose of writing may be to describe precise inform themes. The purpose of the writing may be describe pursued information in internet interacting, find out, regulate and record. Okay, preview the vocabulary, quickly skim and scan. स्कीम होता है मतलब जल्दी जल्दी समराइज कर लेना, स्कैन होता है पढ़ लेना। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहे हैं उसमें से हमने फटक से ढूंढ लिया कि ये वर्ड लिखा है। अनफेमिलियर वोकेबलरी एंड देन ट्राई एंड डिटरमाइन द मीनिंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट। स्कीमिंग क्या होती है, अब पढ़ेंगे। डू अ क्विक surface level reading for the text, paying attention of subtitles, visualization and format to determine whether the text contain information that you might need to use with your own writing. Scanning, do quick reading of the text and search a specific word, phrase, idea visible for the format of a subhead। तो स्कीमिंग होता है बेसिकली उसका क्या निकाल लेना, सार निकाल लेना, उसका समरी कर लेना। स्कैनिंग होता है एक वर्ड जैसे कि विदाउट ढूंढ रहा है तो जल्दी जल्दी बढ़ा तो उसमें दिखाई विदाउट ये मिल गया तो ये हमें मिल गया, अब यहाँ पे इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारा हो गया। ड्यूरिंग रीडिंग, अब रीडिंग करते समय हम क्या क्या कर सकते हैं। सो लुक फॉर द स्पेसिफिक क्लूज इन द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट द ऑथर meaning and purpose for the communication which strengthen your skill as order of reading the text. Reading the text in the order below will help to understand its global meaning before you go on the read, and whole text is details in needed. Once you have gone through the oral order below, you may find that you did not need want to read the whole text. The reading text will be following order। कैसा होना चाहिए, जैसे पहले हाइडिंग एट सब टाइटल्स, फर्स्ट पैरा, लास्ट पैरा, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैरा, होल टेक्स्ट, ऐसे करके पढ़ना होता है। ठीक है, अटेंशन टू अ डिफरेंट एलिमेंट इन अ टेक्स्ट, पे अटेंशन टू व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मतलब हमें ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, हमें देखना है कि आखिर ऑथर बोलना क्या चाहता है, अगर वो चीज़ बता रहा है तो उसका पर्पस क्या है बताने का। हाउ डज द ऑथर यूज द लैंग्वेज to convey meaning, what are the some of the obvious or the hidden terms in the text, try to get a sense of the written or attitude towards the big guessing। हम guessing कर सकते हैं। रीडिंग साइलेंटली, अगर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ठीक है, searching for the answer to your pre-reading questions and formatting of the predictions, looking for the information that responds to your question and confirm on or denies the prediction you made about the text। तो हमें कुछ कुछ जैसे पिक्चर्स पढ़ते हैं, पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर देख के पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है, या फिर स्टोरी पढ़ के हल्का सा समझ आता है आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब पोस्ट रीडिंग करते हैं। आफ्टर रीडिंग, okay, after reading, go back to the initial pre-reading activity and fill in the blanks. Do details analysis of the text in preparing of your own writing.
असाइनमेंट, दिस विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉर्डिंग द टेक्स्ट। ओके, एवलैट कर सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, मैप मैप कर सकते हैं अच्छे से, विजुअलाइजेशन बच्चों को दिखा सकते हैं, और डिस्कस कर सकते हैं अपने कंटेंट के बारे में, उनकी वोकैबुलरी ठीक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनको आंसरिंग और प्रिडिक्टिंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग अ फर्दर रिटन असाइनमेंट। असाइनमेंट दे सकते हैं कि इसकी समरी लिख कर लाओ, या फिर इस स्टोरी को चेंज करके लाओ। अगर स्टोरी की जगह आप, जैसे कि मेन कैरेक्टर की जगह आप होते तो आप यह करते। ठीक है, सो अब 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 से और एंड तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।